I was a professor in the BN College English and now I have superannuated. लेकिन हुजूर हमारा लैंडेड प्रॉपर्टी है और हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, और उतना ही नहीं, हमारे एक ज़मीन को तो पूरा जो अरवल वाला इलाका है उसमें पूरा कब्जा लोग कर लिए थे। बहुत राउंड ऑफ गोली बंदूक चला, बहुत मुश्किल से हम उन लोग पे कभी वो धान लगा देते हैं, कभी हम कटवा देते हैं, कभी वो लगाते हैं, हम कटवा देते हैं। वहाँ पर जब ये रहते हैं इन कनेक्शन विथ हिज लोकल में अपने घर पर, उस समय अगर ये महसूस करते हैं कोई असुरक्षा, आपको सूचना देते हैं, तो आप इसी लाइट में इनको दीजिए। इनफैक्ट ये पॉलिटिकल आदमी है, विधानसभा चुनाव में लड़े हैं, तो पॉलिटिकल आदमी को तो आप सुनिए ऐसा है, उस पर मत हमसे इनवाइट कीजिए कभी। पर्सनालिटी को इनहांस करने के लिए। पर्सनालिटी क्या इनहांस होगा? आपका बॉडीगार्ड कोई काम के लायक रहता है? तब तो फिर कोई बात आपका बॉडीगार्ड दिखाने के लिए, ऑर्नामेंटल बोलिए, इनहांस नहीं। तो कहीं की जेवर पहनने की तरह उसको दिखाने के लिए। एग्जैक्टली वर्ड यही है, ऑर्नामेंटल। वो कोई ये कहाँ से बोल रहे हैं हम? 2000 आपका बॉडीगार्ड को अगर दौड़ा दिया जाए कहीं 2 किलोमीटर तो फिटनेस का पता लग जाएगा कि क्या। यस, sole issue for providing 2 security guards to the petitioner was fine. इसमें हुजूर काउंटर के लिए टाइम हुआ and the committee presided by the collector has come up with the conclusion कि इनको नहीं मिलना चाहिए, but at the same time they say that whenever I am visiting I can request the local police station. तो they have accepted to the extent, और इनका कहना है कि I stay in Patna. It is not like that, because I have, although I am working in Patna, I was working, अब तो I have superannuated. I was a professor in the BN College English and now I have superannuated. लेकिन हुजूर हमारा लैंडेड प्रॉपर्टी है और हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, और उतना ही नहीं, हमारे एक ज़मीन को तो पूरा जो अरवल वाला इलाका है उसमें पूरा कब्जा लोग कर लिए थे। बहुत राउंड ऑफ गोली बंदूक चला, बहुत मुश्किल से हम उन लोग पे कभी वो धान लगा देते हैं, कभी हम कटवा देते हैं, कभी वो लगाते हैं, हम कटवा लेते हैं। बट आई एम कंसिस्टेंट अबाउट इट कि हम ये काम कर रहे हैं। आई एम नॉट लिविंग माई प्रॉपर्टी। तो हमको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। आई कैन रिक्वेस्ट माई लॉर्ड ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे हैव एक्सेप्टेड, that only to the extent that instead of Thana, if my lord where is the stand of the DM? It is in the counter affidavit annexure B, page 12, my lord. Page 12.4. He says that he has threat perception. No. वर्डिंग है हुजूर कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये पटना में पूर्णतः आवासित हैं तथा यदा कदा कभी कभार ये अपने पौटिक निवास पर आते हैं। विशेष शाखा द्वारा इनका सुरक्षा की संबंध। Report was submitted in which year? 2017. It was, yes. Now he is superannuated and he is giving more time to his village. In that case, फिर ये रिप्रेजेंट करें, फिर से इनका कंसिडरेशन होगा। अब ये हुजूर तो फिर हमारा तो पूरा ऑलरेडी एक निर्णय लिया गया है। पेज 12 पर आप देखिए जरा सा। जी। प्लीज आर्गुइंग, इसको पढ़िए। ये अभी निर्णय लिया गया कि अगर महसूस होता है, पढ़िए ना, उसको पढ़िए ना आराम से। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि श्री कुमार अपने पौटिक निवास पर आते हैं और इन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस होती है तो ये स्थानीय थाना में इस आशय पर सूचना देंगे। अरवल पौटिक निवास आगमन के दौरान इन्हें किसी भी प्रकार का सुरक्षा महसूस होता है तो इन्हें अस्थायी तौर पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है जी। तो इतना बार आप मानते हैं कि इनको वहाँ पर जो है अगर कोई आने जाने के क्रम में कोई सुरक्षा महसूस होती है तो आप देंगे जी। तो ठीक है, इनको दीजिए। अगर वहाँ पर जब ये रहते हैं इन कनेक्शन विथ हिज लोकल में अपने घर पर, उस समय अगर ये महसूस करते हैं कोई असुरक्षा, आपको सूचना देते हैं, तो आप इसी लाइट में इनको दीजिए। इनफैक्ट ये पॉलिटिकल आदमी है, विधानसभा चुनाव में लड़े हैं, तो पॉलिटिकल आदमी को तो आप सुनिए ऐसा है, उस पर मत हमसे इनवाइट कीजिए कभी। ठीक है, बोलना उचित नहीं होगा बहुत सी। पॉलिटिकल आदमी एक एमएलए हो जाता है आपके यहाँ, उसको कितना आप सुरक्षा लगाए रखते हैं पता है आपको? जी।
एक बार अगर कोई एक एमएलए हो गया तो जीवन भर के लिए उसके साथ सुरक्षा गार्ड होंगे, है कि नहीं? अब बट है नहीं अदर साइड आई एम नॉट सेइंग, हमारा ये कहना है कि थ्रेट परसेप्शन है 2017 का, ये है हमारा कंसेप्ट। वो आपने जो पॉलिटिकल बात कहा ना, तो पॉलिटिकल हम इसी ऑर्डर से बोल रहे हैं। पॉलिटिशियंस को तो पहला अधिकार है सारी सुरक्षा का। इसी ऑर्डर से बोल रहे हैं कि इनके द्वारा पूर्व में किरथा विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया था। लड़ने दीजिए, उस पर क्यों हम जाएं? वो क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रिटायर हो गए आप, वो थोड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में हर व्यक्ति को अधिकार, वो तो है, होना ही चाहिए। अगर थ्रेट परसेप्शन अगर जेन्युइन है तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर वो पर्सनालिटी को इनहांस करने के लिए। पर्सनालिटी क्या इनहांस होगा? आपका बॉडीगार्ड कोई काम के लायक रहता है? आपका बॉडीगार्ड दिखाने के लिए, ऑर्नामेंटल बोलिए, इनहांस नहीं। तो कहिए कि जेवर पहनने की तरह उसको दिखाने के लिए। एग्जैक्टली वर्ड यही है, ऑर्नामेंटल। वो कोई ये कहाँ से बोल रहे हैं हम? 2000 आपका बॉडीगार्ड को अगर दौड़ा दिया जाए कहीं 2 किलोमीटर तो फिटनेस का पता लग जाएगा कि क्या है। तो मेरा सिर्फ इतना था कि since they have come up, I am granting you liberty. I am granting you liberty in the light of this paragraph 4, this decision. जी, If you will have any threat perception during your stay in the village, जी, ये आने जाने के क्रम में तो लिखा ही है, during your stay at the village, you will report to the police station. जी, and then they will look into that and will provide you protection. जी, हम मेरा सिर्फ हुजूर से था, ठीक है? instead of directing थाना my lords, what I had a request, if my lord may direct to the superintendent of police Arwal, ठीक है, तो बस उतना ही भर हुजूर को मेरा रिक्वेस्ट। SHO के बजाय SP को। जी, जी, that is no issue. जी, जी। लिखिए, heard learned senior counsel for the petitioner and Mr. Iqbal learned AC to GP5 for the state. Next, this writ application has been filed seeking a writ in the nature of a writ of mandamus commanding the respondents to provide 2 security guards to the petitioner for the safety of his life and property. Full stop. Next, Land Counsel for the petitioner submits that at the relevant time when this writ application was filed, this petitioner was engaged as a professor English Milord BN College in the Department of English, Bihar National College, Patna University, and he happened to be the Vice President of the Bihar Nationalist Congress Party. Full stop. It is his case that his village and the village properties are situated in a Naxal affected district of Arwal. Full stop. Now, senior counsel submits that a constant, quite over the grabbing of the property of the petitioner by the Naxals has continued over the years. Full stop. Under this situation, the petitioner got some threat perceptions in the hand of the Naxals, who had forcefully purchased some of the piece of land at one point of time. Full stop. The petitioner represented
to the District Magistrate and Superintendent of Police Harwal on 12/12/2013, praying therein for providing a bodyguard. Full stop. Copy of the representation is in Annexure 1 series to this application. Full stop. And Senior Counsel submits that the petitioner being a citizen of India, it is the bounden duty of the state and the district administration to provide adequate security to the petitioner and his family members. But even repeated reminders, requests when the same did not yield any result, once again representations were made by the Annexure 2 series. Full stop. Next, it appears from the records that a counter affidavit was filed in this case on or about 4/1/2018. Full stop. With the counter affidavit, the District Magistrate Harwal has enclosed a copy of memo number 220 dated 7th April 2017 as Annexure B. Full stop. This is minutes of the meeting of the District Security Committee held on 7/4/2017 of the District Harwal. Full stop. Next, learned Senior Counsel for the petitioner points out that in paragraph 4 of the minutes, it is recorded the decision of the Security Committee has been recorded. Full stop. The committee has though refused to provide bodyguards on permanent basis, but has taken a decision that in case of his visit to his village from Patna, if the petitioner feels any threat, he will inform the suspect of the matter to the local police station, and the local police station shall provide him security on temporary basis. Full stop. Next, Lieutenant Counsel submits that now the petitioner has retired from service and he is spending more time in his village. Therefore, the petitioner requests this temporary arrangement towards his security to be extended, not only to be extended during his stay in the village. Full stop. Next, Mr. Iqbal, learned AC to GP4 submits. GP5 submits that if the petitioner has any such threat perception during his stay at his village,
he may represent in this regard to the Superintendent of Police, Harwal, within bracket respond number 4, and bring it to the notice of respond number 4, who will take an appropriate decision thereon and will ensure that the life and property of the petitioner is not put to danger during his stay in the village. Next, having regard to the facts and circumstances of the case, comma, this court finds that the District Security Committee has earlier taken a decision to provide temporary security to the petitioner during his visit to his village. Full stop. In case the petitioner finds any threat to his life, liberty and property during his stay in the village, he is at liberty to bring it to the notice of the Superintendent of Police Harwal, within bracket respond number 4. Full stop. 4 and the officer in charge of the police station within whose jurisdiction the petitioner resides. बंसी पुलिस स्टेशन. कौन सा है? बंसी. 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 बंसी पुलिस स्टेशन. बंसी पुलिस स्टेशन. एग्रीकल्चर लैंड दो पुलिस छोड़ दीजिए उसको. पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए. Within whose jurisdiction the petitioner resides. Full stop. On receipt of such information, the Superintendent of Police Harwal is expected to act swiftly and take an appropriate decision thereon, keeping in mind that in this democratic country of India, the state has the obligations towards its citizens, and the principle of parens patria is to be kept in mind, wherein the state, being in the shoes of a parent for its citizen, has to provide protection to the citizen of the country. Full stop. The respond number 4 shall ensure that the life, liberty and property of the petitioner be not put to danger during his stay. Full stop. This application stands dismissed.